अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीकली रिकैप। अशर भाई, पहले कोई और बात करने से पहले मुझे सबसे पहले जो सवाल मेरे जहन में आ रहा है इस वक्त वो ये है कि आपने अपनी लास्ट वीडियो के अंदर कहा कि रिज़ाइन दे दें, तो लोगों ने रिज़ाइन दे दिया आपकी बात सुनकर। और जब लोगों ने रिज़ाइन दिया तो फिर आप अगले हफ्ते खुद ही आप नहीं आए, वीकली रिकैप में आप नज़र ही नहीं आए। तो ये चक्कर क्या है कि आप लोगों को मिसगाइड कर रहे हैं, लोगों को गलत रास्ते के ऊपर लगा रहे हैं, लोगों का नुकसान हो रहा है। और फिर आप जो है ये पहले द ग्रेट रेज़िग्नेशन की बात करते हैं, फिर सुनने में आता है ये क्वाइट क्विटिंग क्विटिंग भी कोई चीज़ होती है। तो बड़ी डाउटफुल हो रही हैं चीज़ें, ज़रा आप क्लियर करें, आवाम जानना चाहती है आपके बारे में। जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अवाम को यार ये पता होना चाहिए ना कि हम बीइंग पाकिस्तानीज़ बीइंग ट्रू टू आवर वर्ड, हम जिसको जो मशवरा देते हैं उस पे खुद ही अमल नहीं करते। तो मैंने भी यही किया। आप लोगों को मशवरे सारे दे दिए, खुद कोई अमल नहीं करना उस पे। तो क्या कहते हैं, आई थिंक लास्ट वीक वी हैड टू टेक अ हाइएटस for a week. We got caught up in other things. Alhamdulillah हमारी फिर मगर at the same time we released our क्या कहते हैं प्रीमियर वीडियो जिसे मैं कहूँगा। पैसा बोलता है कि एपिसोड हमने रिलीज की, तो आई होप उस पे भी जितने कमेंट्स हमें मिले उतना बेहतर है, फीडबैक मिले कि what do you feel, or are you sort of going through the same thought process in terms of moving to new jobs or thinking about retiring early. इस तरह के कॉन्सेप्ट्स कोशिश करेंगे कि हम मज़ीद डिस्कस करें इन अ मोर फ्रूटफुल मैनर, कंस्ट्रक्टिव मैनर। ठीक है, तो अब अशर भाई बताएं कि ये सितारों की गर्दिश को देखते हुए, सामने रखते हुए, क्या आपकी जो सितारों को आपने देखा है, परखा है पिछले एक पेशन हफ्ते गोई के है, अंदर। पेशन गोई है। हाँ, अब आपकी पेशन गोई क्या है आने वाले दिनों के लिए? क्या इशारे दे रहे हैं ये सितारे किस तरफ इशारा कर रहे हैं? इशारे नेक इशारे करने से देखें, इंशाल्लाह उस पर मज़ीद बात करता हूँ। Acha, so we're actually discussing the week ending 21st of October 2022. I'll take a moment to pause right here and let you review this disclaimer. By viewing this video, you are agreeing to waive all liability of losses you may suffer. If you do not agree to any portion of the recording, you may discontinue now. So essentially, the week ended up very, very solid for S&P, Dow Jones, and Nasdaq, up about 5% percentage points each. Primarily, I think is hafte there wasn't something to write home about, to be really honest. I think it was just the fact that पिछले हफ्ता and the past few weeks have been very, very difficult for the market, and I think the market just sort of technically corrected, so to speak, and the algorithms, the machine learning algorithms actually maybe brought up some of the how should I say, some of the dip. Overall, last week, as you know, the CPI data came out, and that was not looking so great. Inflation is still continuing to remain high, and as you can see here, if I can just pull this up, inflation continues to remain high. We're still looking at 8.2%. It rose 0.4 percentage points in September, and the thing is, obviously, it seems like it's not going away anytime soon. Even jo core CPI tha, which we usually talk about, the core CPI was up 6.6% as well, and that increased 0.6% month over month as well. So overall जो increase था 40 basis points का and 60 basis points का, वो दोनों यानी इसी तरफ
इस चीज़ की निशानदेही कर रहे हैं कि inflation is not coming back down, and the Fed will continue to raise the interest rates moving forward. Overall, I think what was a bit of a relief last week is that one of the Fed, one of the members of the Fed actually talked about, and I think this was one of the reasons why this week was good, that they will essentially, जो interest rates जो US Federal Reserve increase कर रहा है, they will slow it down, take it down a notch. And essentially जो 75 basis points का increase करते जा रहा है, what they're expecting is that it will start to slow down. Now, do I think that this says anything? I don't really think so, because at the end of the day, what is important to understand is that, as I've just mentioned, कि जो inflation है, because inflation continues to be challenging, and the CPI data is confirming the fact, and I think the PCE data will confirm the same, confirm the CPI reading, is that inflation continues to be a challenge. And when you combine that with the fact that इस Biden administration जो कर रही है, वो basically ये कर रही है कि अपनी जो oil strategic petroleum reserve है, right, उसको it's eating down its strategic petroleum reserve, और उसकी वजह से वो कोशिश कर रही है कि market में stability आए in terms of how gas prices react, and basically the prices at the petrol pump. तो ये जो strategic petroleum reserve hai, that has gone below the levels of 1984, and already ये expected था कि November तक ये last करेगा, ये जो drawdowns हैं. But then Biden administration, जो अभी आपको पिछले 2 हफ्ते पहले आपने देखा कि OPEC, the oil producing nations including Saudi Arabia and the Middle East oil producing nations and Russia, उन्होंने ये फैसला किया कि they'll cut production by 2 million barrels, right? So obviously that is keeping up the pressure on the oil prices. Oil prices will continue to remain high, and as a result of that, हो ये रहा है कि Biden administration, in order to obviously, because as you know, midterms आने वाले हैं. The midterm elections are around the block, and Democrats and Republicans across the United States are preparing for those midterm elections, and उनकी कोशिश ये है Democrats की, that they can run down this strategic petroleum reserve and be able to जैसे कहते हैं ना कि look good in the eyes of the voters. This is not the presidential election. Presidential election is still 2 years down the road. This is the midterm elections that are taking place. So what does that mean? That means that ये जितना reserve ख़त्म होता चला जाएगा, उतनी ज़रूरत पड़ेगी कि इसको replenish किया जाए. At the same time, oil OPEC चूँकि cut down कर रहा है, right? So oil overall continues to remain high, and therefore inflation will continue to remain high. If inflation continues to remain high, you don't really have much of a reason. The Fed, I don't believe, has much of a reason to actually stop any sort of or slow down the pace of the interest rates, increase in the interest rates. अब ये हो सकता है, ये possibility है कि ऐसा हो, maybe अगला 50 basis points or 25 basis points. So wallahu alam. बस the thing is, जो मुझे नज़र आ रहा है वो यही है कि this is a very, very difficult situation right now where we are, and things are not expected in terms of inflation is not expected to cool down anytime soon. In other news, chip stocks were actually rattled last week. Basically the US, the Biden administration has in an effort to curb down the influence of China in the geopolitical realm, in the global world order, किया ये Biden administration ने कि they've put an export ban on companies that were supplying जो original equipment manufacturers हैं,
बेसिकली चिप जो बनती है आपकी जो सेमीकंडक्टर्स, चाइना इज़ अ ह्यूज प्रोडक्शन हाउस फॉर अ लॉट ऑफ द सेमीकंडक्टर्स, a lot of the chips, both analog and digital chips that are used in devices in the US. बेसिकली आप एप्पल देख लें, आप टेस्ला देख लें, आप टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स देख लें, आप बड़ी से बड़ी कंपनीज देख लें, कहीं ना कहीं उनकी जो सेमीकंडक्टर की रिक्वायरमेंट है वो कहीं ना कहीं चाइना फुलफिल कर रहा है, चिप रिक्वायरमेंट जो है. Nvidia and a lot of these companies have their basically manufacturing hubs in China. तो अब ये फैसला हुआ है कि चाइनीज़ फर्म्स को किसी भी तरह की चिप्स, मतलब किसी भी तरह की नहीं, certain semiconductor technologies will be kept out of Chinese military hands or Chinese hands in general. And the idea is to curb the impact of some of these chips, some of these actually machinery to produce chips, and then use it to the disadvantage or or countering US's influence in the region. So essentially, companies like Lam Research, Applied Materials have started to actually pause their operations in China. I believe ASML is also a very famous company that I heard that is starting to have their key executives leave. रातों रात बहुत सारी इन कंपनीज में से जो लोग चाइना में काम कर रहे थे, they had to actually leave the country because of the fact that they had to resign and make sure that they get out before any other sanctions take place. तो अशर भाई, यहाँ पर एक सवाल ये है कि अगर चाइना के अंदर ये अपनी प्रोडक्शन, अपने प्लांट्स वगैरह को बंद कर देंगे, या जो भी ये करना चाह रहे हैं, चाइना की इन्वॉल्वमेंट इसके अंदर कम करना चाह रहे हैं, या बिल्कुल उसको मिनिमम लेवल पे लेके आना चाह रहे हैं, तो ज़ाहिर है डिमांड तो फिर भी कहीं ना कहीं होगी और उसको किसी न किसी तरीके से तो मीट करना है. तो क्या वो फिर प्लांट्स जो हैं वो फिर क्या कहाँ पर खुलेंगे? क्या वो अमेरिका अपने उधर ही इनकी प्रोडक्शन स्टार्ट करेगा, या किस तरह से होगा? हाँ, बेसिकली आइडिया यही है कि आप अपनी प्रोडक्शन फैसिलिटीज़, आई थिंक they've actually given out जैसे कहते हैं, they've actually given out regulations, taken out regulations. I'm forgetting the actual name of the regulation, but जिसमें basically the chip manufacturers are being incentivized to actually produce in the US, in the United States, within the United States. So obviously the idea is to actually move the chip making operations out of the because हो ये रहा है कि वहाँ पे जो local chip US chip makers भी हैं, वो जिन कंपनीज को चिप बनाने के लिए देते हैं, आउटसोर्स करते हैं, वो कंपनीज उस टेक्नोलॉजी को कॉपी करती हैं, एंड देन वो चाइनीज एज पर देम, ऑब्वियसली एज पर द यूएस, वो कॉपी कर कर अपने लिए इस्तेमाल कर रही हैं, राइट? अपने ड्रोन्स में इस्तेमाल कर रही हैं, अपनी चीज़ों में इस्तेमाल कर रही हैं, एंड दिस इज़ द इशू दैट दे आर हैविंग. तो द आइडिया इज़ दैट येस, दे विल हैव टू फेज this in. अब ये अभी भी it's a little bit unclear as to what specifically they're talking about, but the idea is कि certain semiconductor technologies, not everything, मतलब ये नहीं कि कल से फ़ोन क्या कहते हैं चाइना में बनना बंद हो जाएंगे. हाँ, बंद हो जाएंगे. But the thing is, the idea is that certain basically what they're trying to do is US executives पर ये है कि भाई आप पर बैन लग सकता है, and if you continue to work with them, and chip maker equipment manufacturers पर export ban लगाया है कि you cannot supply to them. And जो Chinese outlets में जो काम कर रहे हैं US individuals, US nationals, उन पे भी बैन लगाने का बोला गया, तो they are actually resigning immediately and coming back to the US. क्योंकि मैंने ये सवाल इसलिए पूछा कि अगर वो यूएस प्रोडक्शन, इन हाउस प्रोडक्शन करना शुरू कर देते हैं, तो जाहिर है उनकी प्रोडक्शन कॉस्ट ऊपर जाएगी, और यही वजह है कि जाहिर है वो चाइना के अंदर प्रोड्यूस कर रहे थे ये सारा कुछ. ये भी हो सकता है, ये भी पॉसिबिलिटी है कि शायद एशियन मार्केट के अंदर ही, एशियन कंट्रीज़ के अंदर ही वो किसी और मुल्क में जो है अपने प्लांट्स को मूव करना शुरू करते हैं. ये I think मुश्किल होता है. Actually the thing is, it's not just about plants. Plants तो अपनी जगह हैं,
मसला ये है कि इक्विपमेंट जो है, सप्लाई करने की जो इक्विपमेंट है, मतलब जैसे ये है ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, ठीक है ना, मशहूर है, TSMC है, दिस इज़ a South Korean company, and essentially a giant in their own regards. उनके चाइनीज़ वो चाइनीज़ चिप मेकर्स को इक्विपमेंट सप्लाई करते हैं. ASML जो नेदरलैंड्स बेस्ड है, यूरोप बेस्ड, ASML जो कंपनी है, ASML जो बहुत मशहूर कंपनी है, एंड इट्स रिटर्न द शेयर होल्डर्स अ लॉट ऑफ मनी ओवर द पास्ट कपल ऑफ ईयर्स, वो भी यही बहुत सारी ऐसी इक्विपमेंट्स बनाकर देती है जो कि चिप्स में प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं. तो ओवरऑल आइडिया यही है कि इसको कर्टेल किया जाए किसी तरह, एंड उसकी वजह से जो इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स हैं उनकी सेल्स इम्पैक्ट होंगी अल्टीमेटली, राइट. और आइडिया ये है कि ये जो सेल्स है, जो इक्विपमेंट है, उसकी एक्सपोर्ट को रोका जाए, एंड दैट कुड टेक द शेप ऑफ also removing people of interests such as US nationals working with the Chinese. Also, overall, as you know, earnings season is upon us. It's actually going on. The third quarter S&P EPS, as per FactSet, is expected to be 2.6% down from 9.8% in July. तो FactSet ये एक्सपेक्ट कर रहा है, जो कंसेंसस मतलब एस्टिमेट्स जो FactSet ने कलेक्ट किए हैं, वो क्या कहते हैं, जो ग्रोथ है, EPS की अर्निंग्स ग्रोथ है, दैट्स एक्चुअली बिन रिवाइज्ड डाउन from 9.8% down to 2.6%. And basically जो रिविजन है, that's mostly on the, इवन ये जो ग्रोथ आपको नज़र आ रही है, ये भी मोस्टली एनर्जी रिलेटेड है. अगर आप एनर्जी को निकाल देंगे तो ईयर ओवर ईयर डिक्लाइन ही एक्सपेक्टेड है थर्ड क्वार्टर में भी, with regards to consumer stocks and in other obviously cyclical stocks, with the exception of energy. So let's see. Tesla announced mixed bag of earnings. Netflix actually announced very good numbers, but Snapchat announced very bad numbers. Facebook is supposed to report on the 25th, if I'm not wrong. I think Google is also supposed to report. Microsoft is supposed to report soon. So देखते हैं क्या होता है. Overall, so far it's a mixed bag of earnings, with some sales top line missing targets. Others are facing margin headwinds, and therefore bottom line issues. So let's see how this sort of works out. But overall, मैं ये देख रहा था कि अर्निंग्स का मैंने भी देखा था कि कुछ कंपनीज की अर्निंग्स जो हैं वो जो एक्सपेक्टेड अर्निंग्स थी उनसे ज़्यादा उन्होंने जो एक्सपेक्टेड फोरकास्ट थी उसको बीट किया है. तो और लेकिन ये वजह ये पता चल रही थी, जो मैं आपसे भी पूछना चाह रहा हूँ, कि ज़ाहिर है इंटरेस्ट रेट्स भी बढ़े और इन्फ्लेशन सारी चीज़ें अपनी जगह पर हैं, तो वो इम्पैक्ट हमें अर्निंग्स के ऊपर अभी तक क्यों नज़र नहीं आया? क्या उसकी वजह ये है कि वो इम्पैक्ट नेक्स्ट अर्निंग में नज़र आएगा? क्योंकि अभी ये रिसेंटली 2 महीने की कहानी है जिसके अंदर इंटरेस्ट रेट्स बढ़ना शुरू हुए. सो आई मीन देखें, अर्निंग्स का इम्पैक्ट किस सेंस में आप कह रहे हैं कि नहीं आ रहा, मतलब सवाल तो ये है ना. एट द एंड ऑफ द डे जो थर्ड क्वार्टर है, अभी तक तो जिस तरह हम देख रहे हैं कि for third quarter blended growth rate for S&P 500 is 1.5% so far. And अगर ये जो expectation है, जो अभी 24th मैं आपको दिखाता हूँ, if you allow me to do that, जो अभी जो नज़र आ रहा है हमें, वो यही है कि अर्निंग्स अभी तक जो लास्ट जो फैक्टसेट ने अर्निंग्स इनसाइट के नाम से जो पब्लिश करते हैं, इट्स अ वेरी गुड समथिंग दैट एवरीवन शुड लुक एट. 21 अक्टूबर को इन्होंने इसको रिलीज़ किया. दे आर सेइंग दैट फॉर थर्ड क्वार्टर 2022, with 20% of the S&P actually reporting actual results, 72% of the S&P companies have reported a positive EPS surprise, and 70% of the S&P 500 companies have reported a positive revenue surprise. The thing that I feel that
part of this is a little bit too early to say whether this is true, but a lot of this is to do with the fact that जो earnings estimates थे ना, they have been sharply revised down, and as a result of the panic that is in the market. Actually मैं समझता हूँ कि अगर तो ये क्वार्टर भी बेहतर चला जाता है, even though as I've said क्या कहते हैं, it's still going to be one of the lowest earnings growth rate reported by the index since the third quarter 2020, जब से recovery शुरू हुई थी. But even then अगर आप इसको as a positive ले भी लेते हैं, तो one of the reasons why you can assume this to be true is because of the fact कि panic बहुत ज़्यादा है, and उसकी वजह से लोग underestimate कर रहे हैं actual earnings power को, which I think is going to be fine, but is it going to be that amazing? No. This is the whole point that we're trying to make today. ठीक है. ये नहीं आप ये कह रहे हैं कि अगर एक्सपेक्टेशंस ही कम हो तो फिर दिल भी नहीं टूटते. Exactly. I mean बहुत सारी चीज़ें, I mean जो facts act ने भी I was looking at the report, despite the obviously inflation, जो अब फॉर एग्जांपल अगर आप इन्फ्लेशन को देख लें तो इन्फ्लेशन की वजह से ब्लेंडेड नेट प्रॉफिट मार्जिन फॉर एस.एन.बी फॉर थर्ड क्वार्टर इज 12%, which is below the previous quarter's net profit margin and below the year ago net profit margin, right? However, it's above the 5-year average net profit margin 11.3%. तो ये वही वाली बात है, जो लॉन्ग टर्म ट्रेंड है उसके हिसाब से तो अच्छा परफॉर्म कर रही है मार्केट इन टर्म्स ऑफ द मार्जिन्स दैट इज स्टिल, चूँकि मार्जिन्स आर वेरी की टू अंडरस्टैंडिंग कि इन्फ्लेशन किस तरह इम्पैक्ट कर रही है कंपनीज़ को, राइट? अगर कंपनीज़ की कॉस्ट बढ़ रही है तो उनकी मार्जिन श्रिंक होनी चाहिए, बट और वो हो रही है. क्वार्टर ओवर क्वार्टर डिक्लाइन आ रहा है, जो 12% है, दैट्स अ डिक्लाइन फ्रॉम द प्रीवियस क्वार्टर एंड द ईयर अगो, बट ओवरऑल जो 11.3% 5-year एवरेज है उससे ऊपर ही है, राइट? तो कहने का मकसद ये है कि स्लोली हमें वो क्वार्टरली डिक्लाइन नज़र आ रहा है मार्जिन्स में. वन डज इट स्टार्ट टू फाइनली क्रिएट अ डिक्लाइन, एक्चुअल डिक्लाइन इन अर्निंग्स, मे बी अ कपल ऑफ क्वार्टर्स फ्रॉम हियर, बट अगर इन्फ्लेशन इस तरह चलती रही तो दैट्स फॉर श्योर ये आपको नज़र आएगा बहुत तेज़ी से. आई मीन दिस इज़ द हिस्ट्री फॉर द नेट प्रॉफिट मार्जिन फ्रॉम थर्ड क्वार्टर 2018 टू 2023, और आप देख सकते हैं कि ये 12 जो अभी एक्सपेक्टेड है 2022, दैट्स अराउंड 12% थर्ड क्वार्टर, एंड जो पास्ट रहा है वो 11.3% रहा है. सो ऑल इन ऑल it's the thing is that things are starting to decline. However, as I've said, 72% of the reported actual of the companies that have actually reported, 20% ने report कर दिए, और उसमें से 72% companies ने basically positive EPS surprise दिया है, which I think has a lot to do with the fact that there's all this sort of concern about the market and the impact of inflation, जो कि कोई 100% measure कर नहीं पा रहा, so to speak. Overall, energy continues to remain a huge gainer for everyone. Moving on to the S&P. So as you can see, overall chart जो S&P का है, still in the overall chart, the long-term chart on the monthly is still in uptrend. I think we've talked about this a lot. आप ये देख सकते हैं कि overall chart में it just touched the 50 EMA on the monthly. तो आप ये देख सकते हैं the 50 EMA was around 353, और मार्केट ने बेसिकली इस महीने जो लो मारा था वो तकरीबन 348 का था. It actually created low around touched low around 348. 353 को breach किया था around, but it swung up back. It swung up back and actually closed at 374. तो ये तो ओवरऑल हमें नज़र आ रहा है मंथली चार्ट पे. जो वीकली चार्ट है उस पे यही है कि as I've talked about this previously as well, if I can maybe remove this to help you understand. तो आप ये देख सकते हैं कि डाउनवर्ड ट्रेंड इज स्टिल इन प्ले. जो
जो अभी भी मुझे लगता है कि आई थिंक दिस sort of it touched a key support around 350 348ish. Also the monthly monthly 50 EMA was this point. तो ये एक अच्छा support level बनता हुआ नज़र आ रहा है. What I am more concerned about is that ये जो rally है maybe it's not as strong a rally as we see. इसको एक तरीका मैं देखने का यही है कि it's the highs that it's making are lower than the previous highs, and the lows that it's making are lower than the previous lows, and you can see that as captured as in the RSI. तो RSI ने जो basically यहाँ से जो शुरू हुई है स्टोरी हाई लगाने के बाद मार्केट में, वहाँ से RSI अभी तक उस ट्रेंड को बीट नहीं कर पाया. सो व्हेन ये लास्ट हाई जो लगा है बैक इन अगस्त, RSI रीडिंग वाज अराउंड 55.6. तो आप देखते हैं कि 55.6 के बेसिकली उसको ब्रेक कर पाती है कि नहीं. अगर ये ब्रेक करती है तो मोस्ट लाइकली फिर ये इस ट्रेंड लाइन के करीब करीब आ जाएगी जो कि ये डाउनवर्ड ट्रेंड लाइन है. But so far what I see is with the earnings coming out, maybe some positive momentum. As I said कि earnings revision बहुत नीचे हुआ था, so any positive news will be taken as good, as a good sign for overall health of the economy. But as I said, oil prices continue to remain high. Inflation is going to continue to eat into the profit margins of the companies, and it's only a matter of time before actually they start to report negative earnings, or year-over-year decline in earnings moving forward. So let's see how this goes, but overall trend is still in check, and we're actually very far out from it. Let's see, maybe थोड़ी बहुत हमें recovery नज़र आती है back towards the 405 level जो मेरा 2023 की ending है basically, year end target था. Looking far away from it, let's see, but उसके करीब भी शायद हो सके अगर ये पहुंच जाए. So I think that would still be a reasonable expectation to make right now, given the earnings situation. But inflation is a huge issue right now. ठीक है शबी, तो लग ही रहा है कि पिछले मतलब ऑयल जो है एक टाइम ऐसा आया था कि बिल्कुल इररेलेवेंट सा होके रह गया था. उसकी प्राइसेस इस लेवल पे चली गई थी शायद कि किसी को पता ही नहीं था ऑयल की प्राइसेस क्या चल रही हैं. यानी कोविड से भी काफ़ी टाइम पहले की मैं बात कर रहा हूँ. लेकिन अब जो है वो ऑयल ही ऑयल है, हर जगह पे तेल की बात हो रही है. और तेली तेल नहीं है, यही मसला है. इसलिए चर्चे जो जिसकी कमी महसूस होती है ना शिद्दत से, असल में तभी याद आती है वो चीज़ पे. हाँ, तो और क्योंकि वो स्टॉक प्राइसेस को खासतौर पे इतना मूव कर रहा है, तो अब हर जगह पे उसका चर्चा है. तो अब देखते हैं कि ये जो ऑयल जो कट्स थे जो रिसेंटली ओपेक ने किए हैं, और अमेरिका का जो उसके ऊपर रिस्पॉन्स आया है, और आगे मार्केट किस तरह से उसके ऊपर रिस्पॉन्ड करती है. कुछ चीज़ें जो हैं वो आगे चल के बड़ी इंटरेस्टिंग होंगी. कोई और चीज़ आप ऐड करना चाहें शर्मी? I think oil stocks are to watch, to be, you have to watch out for them. Halliburton actually, I think last week Halliburton ने तकरीबन 15%, Halliburton was up 15% last week. So alone, and the thing is, oil services companies, or are going, to me, I think I'm tilted more towards oil services companies, क्योंकि जो oil services provide करेंगी different companies, Halliburton, Schlumberger, and essentially oil related, anything is expected to do good for now. I think ये बड़ा important है समझना लोगों के लिए कि as we sort of see what's going on with OPEC with the 2 million cut, as we see what's going on with Biden actually announcing last week is encouraging all US or shale companies to actually start producing to become energy independent again, blah blah blah. So I think all of this points out to a very good medium term or short term future for oil stocks. ठीक है, तो अशर भाई, अगर मैं कोकोनट ऑयल में इन्वेस्ट करूं तो क्या इसके ऊपर पे है? यार आप इन्वेस्ट करें और उसको पिएं. आप इन्वेस्टमेंट इस तरह कर सकते हैं, आपकी सेहत के लिए अच्छा है, आप उसको पिएं. पाम ऑयल एक्चुअली बहुत ज़बरदस्त है. वो जो आप अपनी मखनी दाल में जो बनाकर खाते हैं ना, लगाकर तड़का जिससे आप दाल को लगाते हैं, ठीक है ना, तो जिसके बगैर बनी नहीं हाँ सकती. तो आप वो
खाएं कम, इन्वेस्ट ज़्यादा करें उसमें। सही है, सही है। यानी ऑयल, बस ऑयल ही ऑयल हो हर जगह पे, दिन और रात। ऑयल ही ऑयल ढूंढे हैं, जहाँ मिलता है ऑयल जहाँ ढूंढे। मिलता है ऑयल ढूंढे। सही है। चलें जी, यहीं पर हम अपने वीकली रिकैप को एंड करते हैं। फॉर द व्यूअर्स, अगर आपने हमारा पीबीएच की वीडियोस ना देखी हों तो आप हमारे चैनल पे जाकर देख सकते हैं। और अगर आपने हमारे प्राइमर्स नहीं देखे, जिसके अंदर हम अ, अ, बहुत कम ड्यूरेशन के अंदर, एक शॉर्ट फॉर्मेट के अंदर हम बड़ी बेसिक चीज़ों को डिस्कस कर रहे होते हैं, फंडामेंटल और टेक्निकल। अगर आपने वो नहीं देखी तो आप हमारे चैनल पे जाके वो भी देख सकते हैं। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अस्सलाम वालेकुम। उससे For more insights, join our limited access Discord channel now.